animation in PowerPoint. In this chapter, I will tell you about PowerPoint. We have different animation. What is animation? What is slide transition, animation pane? And then we will study how to insert a file. You have made a PowerPoint presentation and now you want to insert a sound, then how you will insert and how you will insert a video file and the hertz type. Now, let's start with the chapter, what are animation? Animation, they are the special effects that we can add to text and object on a slide. They can make audience, ये audience को pay करते attention to important points, control flow of information and make the presentation interesting. और ये presentation को कैसा बनाते हैं? Interesting बनाते हैं. And MS PowerPoint offers animation effect. हमें different animation effect देते हैं. And we have categorized into 4 categories. Entrance effect, emphasis effect, exit effect and motion. Entrance effect controls the manner in which an object is introduced into slide during the slideshow. किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड शो में इंट्रोड्यूस है, इट टेल्स अबाउट दैट whether it appears, it fade, fly, bounce or zoom. Then we have emphasis effect. In this effect occurs when the object is on the slide during the slide. जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्लाइड पे, जब स्लाइड शो हो रहा है उस टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्लाइड पे, they are used to emphasize the object and some of these effects are pulse, spin, underline, darken and fade. Exit effect controls the manner in which the object exits during the slide. And like these are disappear, fly out, split and weave. Motion path effect, if we talk about motion path effect, it enables the object to move from one place to another. ये भी different effect आपको turn होते हुए ये different shape में, loops में, arc में और line में भी. Now adding animation effect. If you want to add animation effect, there are some steps given that you have to follow. Select the text or object that you want to animate. Click on the animation tab, click on more arrow button. Then you will click on the more arrow button in animation group. The gallery of animation effect appear. Now click on the desired animation effect. You will click on the desired animation effect. After we have applied an animation to an object or a text, what you will notice, the number tag will be appear on the object. This implies that animation effect has been applied on the object. इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपका animation effect है वो कहाँ applied हुआ है? Object. Adding multiple animation effect to object, we can add more than one animation effect on object using add animation option to advance animation group of the animation. Then, अगर आपको multiple करना, if you want to add multiple animation effect, then select the same object on which you want to apply multiple animation. Click on animation tab, click on add animation option, advanced animation group में जाओगे, जितने भी आपके effects है वो आपको यहाँ पे दिख जाए. Then you can click the desired effect you want to select. Now you will notice that 2 number text appear on the object and the second animation effect has been applied. Now you can also specify when animation should be played on clicking the drop down button. कि टाइमिंग ग्रुप में जाके आप ऐड कर सकते हो कि आप कहाँ पे एनिमेशन डालना है. On click and without previous. On click to start the menu after a mouse click. Preview में आपको करना पड़ेगा same time previous animation effect. आपको करना पड़ेगा previous पे जाना पड़ेगा. Then we have after previous to start the animation effect immediately. अगर आपको animation effect को immediately start करना है, after previous effect in the list finishes. To specify or set the timing of the effect, duration box available in the timing group. It helps you to change and control the speed of animation. आप इसमें क्या कर सकते हो? Speed को भी control कर सकते हो और change भी कर सकते हो. We can set delay time before the animation begins by using delay box. We can also use reorder animation button. आप reorder animation button का use करके भी move earlier या move later के option को choose करके animation effect आपका क्या हो जाता है? Appear होता है. Then we have slide transition. While watching films and cartoons, आप notice करते हो कि जो next scene begin होता है and one scene ends, the way one slide follow the others. इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं. जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो आपके कहाँ पे होते हैं? जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में चेंज हो.
Now, to add a slide transition, there are the steps. Select the slide on which you want to add slide transition. आपको वो स्लाइड सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप क्या चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन. Click on the transition tab. Click on the more arrow button in the transition to the side group. और आप जितने भी इफेक्ट है उसको डिस्प्ले करो. Choose any of the transition. आप किसी भी तरीके के ट्रांजिशन इफेक्ट को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते. Now click on the effect option. आप इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे in the transition to the slide and select effect of the chosen transition. जो भी आपको chosen transition उसके इफेक्ट को आप चूज कर सकते हैं. Click on the desired effect to select an effect for the chosen transition. आप क्या कर सकते हो, desired effect को चूज कर सकते हैं. Click on the arrow next to sound to display list of transition. And then however over a sound you will hear in the sound you want. जो भी आपने साउंड ऐड करी, अगर आप उसको सुनना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे and then you will select the duration and in the time. Click to apply it, and if you want this, transition of all slide will be present. Now click on mouse click. If you want the slide to stay on the screen, what you will do? First you will slide to stay on screen till the user click the mouse or press the key. Check after and adjust the time you want the next slide to appear after a certain duration automatically. Then if you want to see how transition will look in the slideshow, click the preview button. It will be activated when you apply transition. ये अपने आप activate हो जाएगा जैसे आप transition effect को डालें. Now we have animation pane. Now let us view, modify and reorder the animation effect applied to an object. It shows all animation effect for different objects. On the current slide, it will order they will appear during the slide. Now display the animation pane. Now you have to display the animation pane. How you will display? Click on the animation tab. आप click करेंगे animation tab पे, click on animation pane option in the advanced animation. Animation pane appear to the right side of the PowerPoint. You can click on to play all, and then you can preview the animation effect of the various objects. जैसा भी आप एनिमेशन इफेक्ट डालना चाहते हैं, वी कैन रीऑर्डर द एनिमेशन पेन इफेक्ट बाय क्लिकिंग ऑन द एनिमेशन इफेक्ट. आप जो रीऑर्डर वाला ऑप्शन होता है ऐसे क्लिक वाला, इस बटन पे जाके आप उसको चेंज कर. नाउ इंसर्टिंग साउंड. टू इंसर्ट अ साउंड फाइल फ्रॉम द ऑडियो फाइल टू अ स्लाइड शो, यू विल क्लिक ऑन द स्लाइड एंड यू वांट टू ऐड अ ऑडियो. यू कैन आल्सो इंसर्ट टैब. आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन अंडर द ऑडियो ऑप्शन and click on the audio on my PC, the insert audio dialog box. Now select the desired audio file, click on the insert. फिर आप किस पे क्लिक करोगे? Insert बटन पे, insert a recorded sound. अब आप क्या कर सकते हो? Recorded sound को insert कर सकते हो. You will click on the slide on which you want to add audio. Click on the insert tab. फिर आप insert tab पे क्लिक करोगे. And then you can you will click on the arrow of audio option and you can click on record audio. आप record audio पे जाके क्या कर सकते हैं? Audio sound dialog box appear होगा, आप audio को record कर. You can write the name of the audio recording. Click on the record button to start recording. आप क्या करोगे? Record button click करोगे और start करोगे record. Click on the stop button when you finish recording. You can click on the play button to listen the recording. And then you will click on OK button. The audio file gets inserted in the slide. तो जैसे आप insert करोगे तो audio clip का जो icon होता है ना, वो आपको show होगा. The audio format and playback tab जो होता है वो आपका appear हो जाएगा audio tools में. And we click on the audio clip icon on the slide. जैसे कि आप audio clip पे क्या करोगे? Click करोगे. Then the playback tab as an option. एक प्लेबैक टैब का ऑप्शन हो, आपको यहाँ पे आप प्ले अक्रॉस, वॉल्यूम, कोई लूप करना है, कोई हाइड करना है, ये सब आप इसमें चूज कर सकते. These are the effect you have to identify. Then we have inserting video file. If you have to insert a video file, how you will insert? सबसे पहले what you will do? You will click on the slide and add a audio. Click on insert tab. आप insert tab पे जाएंगे. Click on the down arrow under video option and the media group a menu. Click on the device option, the insert video dialog box.
नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड वीडियो. आप डिजायर्ड वीडियो को सेट करेंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन. द वीडियो फाइल गेट्स एडेड टू द स्लाइड. और जो आपकी वीडियो फाइल है वो स्लाइड में क्या होगी, ऐड हो जाएगी. एंड द प्लेबैक टैब हैज अ वीडियो ऑप्शन ग्रुप, जिसमें आप क्या करोगे, जो कमांड है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है हाउ वीडियो प्ले, और सेलेक्ट करोगे डिजायर्ड ऑप्शन. नाउ रिहर्स टाइम. A presentation can be self-running using rehearse timing features. मतलब इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो सेल्फ रन करती है वन बाय वन. आपको इसमें माउस की नीड नहीं होती. The rehearse timing features helps you to find how much time we would need to present a slide and what would be the total time required. The total time required क्या होगा, and set the timing. To set the timing you have to follow the step. सबसे पहले आप स्लाइड शो टैब पे जाएंगे, रिहर्स टाइमिंग के ऑप्शन पर को जाके क्लिक करेंगे और सेटअप ग्रुप. Then the presentation starts playing full screen mode and the recorder toolbar appears and the next button on the recording toolbar. Go through all the slides in the presentation. आप क्या करोगे, go through करोगे जितनी भी slides हैं presentation की one by one, and a Microsoft PowerPoint dialog box appears and the timing of the presentation add. Click on the yes to accept the time. अगर आपको accepted time है तो आप click करोगे yes. ठीक है. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today.